Now we will discuss division algorithm for polynomials. अब हम division algorithm for polynomial discuss करेंगे. Now in this division algorithm, if a polynomial fx is divided by non-zero polynomial gx, then there exists a unique polynomial qx and rx such that fx equal to gx into qx plus rx. Now if fx is divided by gx, कोई पॉलिनोमियल fx को अगर gx से डिवाइड देंगे, then if fx is divided by gx, then there exists a polynomial qx, and after dividing qx, here remainder is rx. Then we say that in this division algorithm, fx equal to gx into qx plus rx, where this qx is called quotient and this rx is called remainder. ध्यान रखिए, किसी पॉलिनोमियल का fx का gx से डिवाइड देंगे, then there exists another polynomial qx, and here after dividing, here remainder is rx. Then division algorithm means fx equal to gx into qx plus rx, and you know that dividend equal to divisor into quotient plus remainder. You know that dividend equal to divisor into quotient plus remainder. That is a division algorithm for a polynomials. Now next is factor of a polynomial. What is factor of a polynomial? A non-zero polynomial gx is called a factor of any polynomial fx if there exists if and only if there exists some polynomial qx such that fx equal to gx into qx. Then you say that gx is a factor of this fx. Now this polynomial gx is a factor of this polynomial fx if fx equal to gx into qx. Now factor of polynomial means a non-zero polynomial gx. कोई non-zero polynomial gx है. This gx is called factor of any polynomial fx if and only if there exists some polynomial qx such that fx equal to gx into qx. Then you say that gx is a factor of this fx. fx equal to gx into qx means thus a non-negative polynomial, non-negative zero polynomial gx is called factor of polynomial fx. Now you say that this gx is a polynomial of fx if and only if on dividing by fx by gx. अगर fx को gx से डिवाइड देंगे and then remainder is zero, then you can say that gx is a polynomial, gx is a factor of this polynomial fx. ध्यान रखिएगा, gx is a polynomial of fx if and only if condition is if fx dividing by gx and the remainder is zero. अगर fx का gx से डिवाइड दें और अगर आपका remainder zero आए, then you can say that gx is a factor of this polynomial fx. Now example is, now let fx equal to x square plus 5x plus 6. Now factorization of x square plus 5x plus 6 is x plus 2 multiplying x plus 3. x square plus 5x plus 6 को आप splitting the middle term से factorize करेंगे तो factorize क्या आएगा, x plus 2 multiplying x plus 3. Then you can say that x plus 2 is a factor of x square plus 5x plus 6, or x plus 3 is a factor of x square plus 5x plus 6. Now this fx equal to x square plus 5x plus 6. Now x plus 2, अगर आपका x plus 2 इसका factor होगा, then x plus 2 equal to 0 means x equal to minus 2. Now this polynomial, now value of this polynomial at x equal to minus 2 is 0. ध्यान दीजिए. Now put x equal to minus 2 in this polynomial x square plus 5x plus 6. Minus 2 square plus 5 into minus 2 plus 6. Minus 2 square 4. 5 into minus 2 minus 10 plus 6. And 4 minus 10 minus 6. And minus 6 plus 6 equal to 0. And therefore x plus 2 equal to 0 से आपका x की वैल्यू क्या आई थी, minus 2 आया था. अब आपका now value of x equal to 2, and after value of x equal to 2, this f of minus 2 equal to 0. And after putting x equal to minus 2 in this polynomial x square plus 5x plus 6, then after putting x equal to minus 2, this polynomial fx equal to 0. This means that f of minus 2 equal to 0, and therefore you can say that x plus 2 is a factor of this polynomial. अगर x plus 2 इस polynomial का factor है तो इसका मतलब इसकी जो value आएगी x equal to minus 2 पर, ये polynomial क्या आएगा, 0 आएगा. And that's why we can say that x plus 2 is a factor of this polynomial x square plus 5x plus 6.
Now after this write down next heading remainder theorem. What is remainder theorem? If a polynomial fx is divided by x minus alpha. अगर आपका कोई polynomial fx में अगर x minus alpha का divide देंगे then the remainder is f of alpha. ठीक है, if this polynomial fx is divided by x minus alpha then the remainder is equal to the polynomial f ऑफ एल्फा. एफ ऑफ एल्फा का मतलब है एक्स की जगह हमें क्या रखना है, एल्फा रखना है. नाउ लुक हियर, एक्स माइनस एल्फा, अगर आपको एक्स माइनस एल्फा से डिवाइड देना है देन एक्स माइनस एल्फा इक्वल टू 0 मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू एल्फा एंड देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ दिस वैल्यू एट द पॉइंट एल्फा. ध्यान रखिएगा, इफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एल्फा देन द रिमाइंडर इज पॉलिनोमियल ऑफ द वैल्यू एल्फा. उस एल्फा पर वैल्यू जो होगी उस पॉलिनोमियल के लिए एफ एक्स के लिए देन दिस रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ एल्फा. दैट इज अ रिमाइंडर थ्योरम. एग्जाम्पल ऑफ रिमाइंडर थ्योरम इज फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल एफ एक्स डिवाइडिंग बाई दिस 2x प्लस 5. ध्यान रखिएगा, अगर इस पॉलिनोमियल में 2x प्लस 5 का डिवाइड देंगे तो आपको रिमाइंडर फाइंड करना है. फाइंड द रिमाइंडर इफ दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडिंग बाई 2x प्लस 5 और by using remainder theorem find the remainder on dividing this polynomial by 2x plus 5. Now first of all write down this 2x plus 5 equal to 0. अगर आपका 2x plus 5 से डिवाइड देंगे then 2x plus 5 equal to 0. Put this 2x plus 5 equal to 0 and 2x equal to minus 5 and x equal to minus 5 upon 2. And therefore by let this polynomial fx equal to 3x square plus 5x minus 11. Now by using remainder theorem you know that if fx is dividing by x minus alpha then the remainder is by using theorem remainder theorem f of alpha. तो आपका वो रिमाइंडर क्या आएगा, f of alpha. एल्फा क्या है आपका यहाँ पे -5/2. ध्यान दीजिए, ये जो डिवाइड देंगे आपका 2x प्लस 5 से इसको आप 0 के इक्वल रखिए और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कीजिए. अब x की वैल्यू जो -5/2 पर होगा इस पॉलिनोमियल के लिए वही इसका रिमाइंडर होगा. And that's why let fx is given. Now by using remainder theorem this remainder equal to function of a polynomial of this value -5/2. -5/2 पर जो इस polynomial की वैल्यू होगी वही इस polynomial का डिवाइड देने के बाद रिमाइंडर आएगा. Now f of -5/2 means 3 multiplying value of x is -5/2 whole square plus 5 multiplying x means 5/2 minus 11. Now 3 into -5/2 whole square plus 5 multiplying -5/2 minus 11. यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या था, 3x square plus 5x minus 11 और आपका 2x plus 5 equal to 0 से अगर डिवाइड दे रहे थे तो 2x plus 5 equal to 0 means 2x equal to -5 and x equal to -5/2. Now this remainder is the value at this -5/2. -5/2 whole square 25/4. 3 multiplying 25/2 plus minus 5 into 5/2 25/2 minus 11. 3 into 25/4 75/4 minus 25/2 minus 11/1. Now LCM of 4, 2 and 1 4. 4 dividing by 4 1. 1 into 75 75. 4 dividing by 2 2. 2 into 25 50. 4 dividing by 1 1. 1 into 11 44. 75 minus 50 25 and 25 minus 44 means minus 19/4. And therefore if this polynomial fx is dividing by 2x plus 5 then by using remainder theorem this remainder is minus 19/4. That is the answer of this question. Now after remainder theorem next is factor theorem. What is factor theorem? If fx is any polynomial and if fx is a polynomial and alpha is any real number then x minus alpha is a factor of fx if and only if f of alpha equal to 0. ध्यान दीजिए, if fx is a polynomial, fx आपका कोई polynomial होगा and alpha is a real number, alpha कोई real number लेंगे then x माइनस एल्फा इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स. अगर x माइनस एल्फा इस एफ एक्स का फैक्टर होगा वो कब होगा, इफ एंड ओनली इफ फंक्शन ऑफ दिस एल्फा, ये जो पॉलिनोमियल है एफ एक्स, इसकी जो वैल्यू एल्फा पर होगी वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए. नाउ अगेन फैक्टर थ्योरम मीन्स if fx is a polynomial and alpha is a real number then
x minus alpha is a factor of fx if and only if function of this polynomial or value of this polynomial at x equal to alpha. This means that this f of alpha is equal to 0. This means that इस polynomial की value जो alpha पर होगी वो क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए. Now example of factor theorem. Example is x minus 5 is a factor of 2x square minus 11x plus 5 or not. आपके प्रूफ करना है क्या x minus 5 इसका फैक्टर है या नहीं है. Now x minus 5 is a factor of this polynomial. Now let fx equal to 2x square minus 11x plus 5. Let this polynomial fx equal to 2x square minus 11x plus 5. अब ये minus x minus 5 इसका फैक्टर है या नहीं. Now write down x minus 5 equal to 0 means x equal to 5. Now put x equal to 5 in this polynomial. After putting x equal to 5 both side, function of this value x equal to 5, right hand side 2 into 5 square minus 11 into 5 plus 5. 2 into 5 square means 25, 2 into 25 50, minus 11 into 5 55 plus 5. 50 minus 55 minus 5 plus 5. Minus plus 5 means minus 5 plus 5 is 0. And that's why polynomial of this polynomial at this value 5 is equal to 0. आपका क्या आया था? If factor theorem क्या था? If fx is a polynomial and alpha is a real number. If fx is dividing by x minus alpha, if and only if fx is a x minus alpha is a factor of fx if and only if function of or polynomial of this value at alpha equal to 0. ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर x माइनस 5 इसका फैक्टर था, इसका मतलब x माइनस 5 इक्वल टू 0 रखिए और x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 5. अब अगर x माइनस 5 इसका फैक्टर होगा तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर हम 5 रखेंगे तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 5 पर क्या आना चाहिए? ये 0 आना चाहिए. एंड दैट्स व्हाई f of 5 इक्वल टू 0 मीन्स बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम यू कैन से दैट x माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल fx. That is x minus 5 is a factor of 2x square minus 11x 5 plus 5. अगर ये 5 पुट करने के बाद अगर ये रिमाइंडर 0 नहीं आता, सॉरी ये वैल्यू अगर 0 नहीं आती पॉलिनोमियल की, तो हम कह सकते थे कि x minus 5 is not a polynomial, not a factor of this polynomial. But after putting x equal to 5, you can say that by using factor theorem, x minus 5 is a factor of this polynomial fx.